वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले ऑफ हॉगवर्ट्स लेगेसी। तो आज मैं ट्राई करूंगा 2 ऑब्जेक्टिव पूरा करने का इस गेम प्ले में। पहला होगा सेबेस्टियन की हेल्प करना, एना को क्योर करने में, एंड दूसरा है एस्ट्रोनॉमी क्लास अटेंड करना। तो यार लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं आज की गेम प्ले। What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. देखो यार, ये डार्क आर्ट डेंजरस तो है नो डाउट, लेकिन मुझे सीखना भी है। The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. कोई दिक्कत नहीं है भाई। I understand. You needn't tell me if you don't want to. If I were you, I'd be begging for more details. अरे तो फिर बता ही देना भाई, पूछ ही लेता हूँ यार, यही सही रहेगा। अभी से बताना ही है तो। It's not that I'm not interested. And you can certainly trust me if you want to tell me anything. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? नहीं भाई, मैंने इसका नाम भी नहीं सुना अभी तक। What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse, Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. तो देखो यार, सीन अभी ये है कि सेबेस्टियन को लगता है कि एन को ठीक करने के लिए स्क्रिप्टोरियम में कोई ऐसी चीज़ है जो रखी हुई है, बट वहाँ जाने के लिए एक कर्स सीखना होगा जो ओमिनस जानता है, लेकिन वो बताएगा नहीं क्योंकि उसे डर लगता है। उसके साथ पहले एक हादसा हुआ था, खैर वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ एस्ट्रोनॉमी क्लास अटेंड करने। have to take astronomy. It's not even magic. And your reading is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. ओके तो देखो, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे इंडियन टीचर है प्रोफेसर शाह, जो कि एस्ट्रोनॉमी सिखाती है यहाँ पे, एंड एस्ट्रोनॉमी आया भी इंडिया से ही है। Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. ओके ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। वैसे तो इससे पहले मैंने कभी टेलीस्कोप यूज नहीं किया। ओके फोकस। Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the Highlands, from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. ओके तो क्लास तो खत्म हो गई, लेकिन जैसा कि प्रोफेसर शाह ने कहा कि मुझे अपना टेलीस्कोप खरीदना होगा। Hello!
I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Okay, अच्छी बात है तो. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. ओके तो अभी जाना है मुझे वो टेलीस्कोप लेना है. एंड यार ये देखकर अच्छा लगा ना कि हॉगवर्ट्स लेगेसी गेम में एक इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट भी है, जो देखकर काफ़ी अच्छा लगता है. एंड इसका नाम है अमित ठक्कर, क्योंकि देखो यार इंडिया में हैरी पॉटर फ्रेंचाइज के बहुत सारे फैन हैं. एक सेकंड मैं नीचे तो आ गया हूँ. ओके यहाँ पे मुझे फील्ड गाइड मिल जाएगा. सही, जैसा कि मैंने सोचा था. लेकिन अभी मुझे फील्ड गाइड नहीं, अभी मुझे यहाँ से टेलीस्कोप उठाना है एक. ओके उधर है टेलीस्कोप. This was his old telescope. Looks practically brand new. मुझे नहीं लगता मुझे अभी प्रोफेसर शाह से बात करना चाहिए, क्योंकि अमित ने मुझे बुलाया अभी. एक सेकंड, कहाँ जाना है? ओके नीचे जाना है मुझे. The perfect night for... I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. ओके तो इस हेल्प में एक कैच है. मैं समझ गया, मुझे कुछ करना होगा. I had a feeling there would be a catch to that telescope. No. I certainly wasn't trying to bribe you or anything. But are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. ओके चलो सही है. देखो इसके साथ कोई नहीं जा रहा है, एंड इसने मुझे टेलीस्कोप दिया है तो मैं All right, जाऊंगा I इसके साथ. suppose I can go with you. I hope it's worth it. It will be. Trust me, I have read practically everything there is to read about this. It should be brilliant. Shall we? ओके तो मैं अभी एक्साइटेड हूँ ये जो भी स्टार गेजिंग. ओके ये रहा The अमित, और table मैं is on a लोकेशन पे हूँ. castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. तो मुझे अभी एक टेबल ढूंढनी है. ओके चलो सही है. लेकिन मुझे लगता है टेबल ऐसे It is बाहर गार्डन में nice तो नहीं having a मिलेगी. fellow stargazer to explore with. ओके मुझे Happy कैसल to में be जाना है. here. भाई ये पहले ही. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. यही अच्छा रहेगा कि मैं ही लीड करूं, क्योंकि भाई ये हर जगह रुक जा रहा है और मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ. ओके यहाँ कुछ तो सीन है. एक सेकंड यहाँ फिर. Foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not एक as... सेकंड यहाँ पे दो बॉक्स है. tidy as इसे I शायद मुझे expected. तोड़ना है. मे बी मैं तोड़ दूँ क्या इसे? हाँ मुझे तोड़ना ही था. ये ब्लॉकेज था. मुझे लगा था कि इसे कुछ यहाँ पजल वजल होगा, लेकिन इतना भी नहीं था यहाँ पे. खैर मैं इस कमरे में. ओके Revelio. एंड मैं बता दो यहाँ कोई आम मकड़ियाँ नहीं है, काफी मॉन्स्टर मकड़ियाँ रहती हैं. ओके एक सेकंड यहाँ कुछ तो मुझे You दिख don't रहा think है. any spiders might एंड be मेरे ख्याल से lurking वो about? टेबल जैसा ही चीज़ है. Oh no, not this close to school, Amit. Look, there's a table. I think दिख रहा है भाई. we should do the honors.
Go on, try it out. ठीक है, अब तुम इतना फोर्स कर ही रहे हो तो मैं ट्राई करता हूँ। ओके, तो मैं समझ गया, मुझे इसे एक परफेक्ट शेप में अलाइन करना है, जो कि इतना मुश्किल नहीं होगा मेरे ख्याल से। सबसे बड़े वाले स्टार के लिए थोड़ा जूम आउट करना चाहिए। थोड़ा मुझे रोटेट करना पड़ेगा। चलो सही हो गया। I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. ओके, चलो ठीक है, यहाँ का तो मेरा काम खत्म हो गया और मैं अभी समझ चुका हूँ कैसे इस टेबल का यूज़ करना है। अगर मुझे रास्ते में कोई भी ऐसा टेबल दिखेगा तो मैं What an excellent proof. क्योंकि यहाँ का तो काम हो गया। एंड मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं चला जाऊँ सेबेस्टियन के पास, या फिर डिपेंड करेगा अभी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं सेबेस्टियन के पास ही चला जाऊँ, क्योंकि जैसा कि उसने बताया था कि एन को अगर ठीक करना है उस कर्ज से तो मुझे और ओमनस को जाना पड़ेगा। एंड ओमनस अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है तो उसे मनाना पड़ेगा। एक सेकंड, नेटसाई का ओके, नेटी का आउला है एंड इसे शायद हार्लो का लोकेशन मिला है, तो मैं जाकर पहले नेटी से मिल लेता हूँ, फिर मैं सेबेस्टियन से मिलूँगा, क्योंकि यार हार्लो को ढूंढना अभी बहुत ज़रूरी है। ओके, मैं आ गया हूँ लोकेशन पर, लेकिन नेटी नहीं दिख रही यहाँ पर। Off on another ad- Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? देखो यार, मुझे नहीं लगता कि इन्हें कुछ पता होगा, क्योंकि अगर इन्हें पता होता तो ये खुद ढूंढ लेती। He must be around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. Is there anything more you can tell me about Harlow? He's Victor Rookwood's second in command. A miserable, awful creature. Vicious and murderous. भाई काफी खतरनाक डिस्क्रिप्शन था उसका, लेकिन एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चंस पे भी पूछ ही लेता हूँ। What reason would Harlow have to kill your husband? My husband had been looking into Harlow's dealings and discovered some of what he's been up to. I begged him to leave it alone, but he was convinced that... ओके ठीक है, तो मुझे अभी जाकर आर्ची को ढूंढना We'll चाहिए। find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? तो देखो यार, मैं तुम्हें शॉर्ट बताता हूँ। हार्लो रुकवुड का ऑफिसर इन कमांड है, सेकंड ऑफिसर इन कमांड है, एंड उसने इनके हस्बैंड को मार दिया। एक सेकंड पहले मैं इसको मार दूँ। ये मकड़ी पता नहीं कहाँ से आ गई भाई, रैंडम। ओके एक सेकंड रुको यार, पहले मुझे
ये स्पेल सही रहेगा। चलो अब मैं कुछ नया ट्राई करने वाला हूँ इस पर। Levioso. चलो Glacius. उसे तो मैंने जमा ही दिया दोस्त। ओके एक सेकंड Levioso. ओके इसके लिए मैं तैयार नहीं था। Levioso. खैर कोई बात नहीं। Protego. Confringo. Expelliarmus. चलो मकरिया तो मारी जा चुके हैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि हार्लो ने इनके हस्बैंड का मर्डर कर दिया है। What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. Revelio. This must be little Archie's hideout that Mrs. चलो Bickle सही। यहाँ पे mentioned. मुझे कुछ ढूंढना है, मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. ओके तो देखो ये जो लोकेशन है ये आर्ची का हाइड आउट है। मतलब वो अगर आता है कहीं पे अपने घर से दूर तो यहीं पे आता है। एंड यहाँ पे वो है नहीं तो मुझे लगता है कि उसे हार्लो ही उठा के ले गया। Archie's footprints. He went this way. ओके यही ढूंढना था क्या? चलो सही, फुटप्रिंट्स के पीछे अभी जाना है बस। अरे ये भेड़िए कहाँ से आ गई? ओके भेड़िए आ गए भाई। लेकिन मैं आराम से मार दूंगा इनको, कोई ऐसे दिक्कत नहीं। Protego. चलो बढ़िया। Incendio. Expelliarmus. चलो सही, मुझे लगता है साढ़े ओके दो अभी और हैं। ओके सारे खत्म। I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. ऐसा होता तो उसकी बॉडी आ जाती। Revelio. नहीं भाई क्रॉस तो किया उसने, लेकिन मेरे ख्याल से भेड़िए नहीं होंगे यहाँ पे। खैर जो भी होता है। ओके मुझे इस लोकेशन पे भी कुछ Archie went this way. ओके उसके हैं फुटप्रिंट्स हैं। मतलब वो यहाँ फंसा तो नहीं है भेड़ियों के बीच में, इतना कंफर्म है दोस्त। I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. भाई ये फ्लेम मैं एक सेकंड, ये पहले मैं फ्लेम जलाऊंगा क्योंकि इससे मैं फास्ट ट्रैवल कर सकता हूँ आराम से। You can't imagine how multiple sets of footprints. ओके मतलब ये उसे Harlow हार्डलो caught ही up लेके to him गया। here. This is not good. They went this way. ओके एक सेकंड मैं इन्हें कैप्चर कर लेता हूँ क्योंकि यार बार नहीं दिखाई देते अभी। ओके एक तो पकड़ा गया। मेरे ख्याल से मुझे एक और पकड़ना चाहिए। ओके चलो सही, Thestrals. इसे ही पकड़ लेता हूँ ना, क्योंकि देखो इनके पीछे एक तो पोचर्स लगे हुए होते हैं हमेशा इन You बीच के can see पीछे। Thestrals too. तो अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ I से इन्हें witnessed रेस्क्यू कर death लूँ। when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death Revelio. deserve some comfort. इसे भी कैप्चर कर लूँ क्या मैंने? तो छोड़ो यार, दो को तो मैंने कैप्चर कर लिया। ये रहे डार्क विज़र्ड्स, लेकिन मैं आराम से मार दूँ। ओके इस पे कुछ असर नहीं कर रहा है। Incendio. Protego. बहुत बढ़िया भाई। ओके ठीक है भाई, आराम से दो। अरे यार कहाँ फेंक दिया मैंने? एक सेकंड अभी यहाँ और भी हैं। चलो ये भी गया। एक सेकंड यहाँ है भाई, एक और है। एक नहीं दो तीन है अभी। नहीं खैर चलो बच गया मैं। चलो सही। और भी कोई है? अभी जिंदा है भाई वो।
अरे यार मैं लॉक क्यों है? मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, एक सेकंड। अरे यार ये काम नहीं आएगा, रुको। एक काम करता हूँ ना, मैं वो मारता हूँ क्योंकि भाई इसके बाद बहुत खतरनाक स्पेल, बहुत अच्छा। यही शॉट चाहिए था मुझे। यार क्या इसने लॉक किया था ना, मैं निकल ही नहीं पा रहा था भाई। खैर भी डायमंड टेंट के अंदर जाने का इतना बड़ा ये दिख तो नहीं रहा था भाई बाहर से, जितना बड़ा ये अंदर से है। खैर अभी मुझे उसके बेटे को बचाना है। एंड यहाँ मुझे और भी डार्क विज़र्ड तो नहीं दिख रहे, लेकिन होंगे इतना कंफर्म है। ओके एक तो यही रहा, नाम लिया शदाना सर, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे आराम से मार दूंगा ऐसे ही। चलो सही, एक है अभी वहाँ एक सेकंड इधर साइड मैं ये ले लेता हूँ क्योंकि एशियन मैजिक का मीटर भी फुल रखना है, क्योंकि यार इतना तो कंफर्म है कि हार्डलो से लड़ाई होगा, एंड अगर नहीं होता है तो फिर आगे तो मिलेगा ही ना वो। चलो आवाज़ तो आ रही है किसी की। एक सेकंड, यहाँ नहीं भाई, मुझे नीचे आना है। ओके भाई, आगे तो पूरी फौज दिख रही है मुझे डार्क विज़र्ड्स की। ओके टाइम है अभी इन लोग से मुकाबला करने का, तभी मैं उसे छुड़ा पाऊंगा, एंड रास्ता ही यहीं से जाता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इन्हें मारना ही होगा। बहुत अच्छा, दूसरे की बारी ये गया भाई। ओके एक सेकंड, चलो सही, एक तो गया। ओके एक सेकंड, हील करना होगा भाई, लोग खतरनाक लोग हैं दोस्त। ओके ये मैंने अभी उसे चिकन बना दिया, अभी तक तो रोस्ट भी होगी। सही, क्या काउंटर था भाई। अरे ये मेरी स्टिक बहुत बढ़िया। कहाँ जा रहा है दोस्त, इधर। ओके मेरे ख्याल से मुझे एशियन मैजिक जल्दी लेना चाहिए क्योंकि अभी मीटर खाली है। बहुत सही, इतना काफ़ी होगा। ओके नीचे उस बच्चे की आवाज़ तो आ रही है मुझे, लेकिन रास्ता किधर? ओके यहाँ पे ऊपर। एक सेकंड, ऊपर नहीं दोस्त, नीचे। ओके ये रहा भाई, इसे तो बंद कर रखा है। Archie Bickle. खैर मैं इसे छुड़ा लेता हूँ, वैसे तो मुझे अभी हार्डलो मिला नहीं। Your mother sent us to find you. अगर मिलता तो अभी मैं उसका दी एंड कर देता। खैर ये लॉक को खोलना पड़ेगा मुझे। Sorry. We need to get this open. Aloha Mora. Easy था, उतना मुश्किल भी नहीं था। A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get you home. We know a safe way back. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. ठीक है, लेकिन We don't मेरे want to पीछे worry उससे you. खतरनाक लोग आ चुके I'm हैं। sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. ओके ठीक है, मैंने इनसे तो बात कर लिया, लेकिन टाइम है अभी यहाँ से निकलकर सेबेस्टियन के पास जाने का, क्योंकि यार एना के लिए क्योर अभी ढूंढना जरूरी है। जैसा कि उसने बताया कि अभी एक सीक्रेट रूम है जहाँ मुझे जाना है, शायद स्क्रिप्टोरियम नाम था उसका। ओके ठीक है, एंड उसने बताया था कि ओमनिस इस चीज़ के रेडी नहीं है, तो शायद मुझे वेस्टिंग के साथ मिलकर पहले उससे मनाना पड़ेगा, फिर ही वहाँ जा पाएंगे हम, क्योंकि देखो उस कर्ज के बिना तो ओपन होगा ही नहीं वो सीन, क्योंकि वो कर्ज चाहिए तुम्हें एंटर करने के लिए, तो वो ज़रूरी है, एंड वो कर्ज सिर्फ अभी ओमिनिस को ही आता है।
कोई बात नहीं, देख लूँगा क्या करना है आगे। मैं और सेबेस्टियन मिलकर शायद उसे मना लेंगे, क्योंकि देखो एना को भी ठीक करना ज़रूरी है। What do you want? If I could undo all that happened that day, I would. अरे यार, मैं सोच रहा था कि मैं कूद जाऊंगा, लेकिन ठीक है, मुझे पूरा घूमना ही होगा अभी। Revelio. देखो इस जगह पे मैं अभी आया हूँ, ठीक है, तो यहाँ मुझे बहुत चीज़ें मिल सकती है, इसलिए मैं बार बार रिवाइज यूज़ कर रहा हूँ। पता नहीं कब। ओके, मुझे इसके सामने नहीं जाना है। अगर मैं इसके सामने जाऊँगा तो ये अपने आप लॉक हो जाता है, इसलिए मुझे यहाँ पे एक स्पेल यूज़ करना पड़ेगा। ओके, टाइम है I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. ओके, तो अभी मुझे पता लगा है कि सेबेस्टियन ने उससे बात की, लेकिन वो शायद नहीं माना। तो अभी मैं ट्राई करूंगा उससे बात करने का एक बार। हो सकता है कि भाई वो मदद कर दे। Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. There he is. ओके, वो रहा ओमिनस, एंड मैं इससे बात करने का एक बार ट्राई करता हूँ। What are you doing here? आई होप कि ये हेल्प कर दे। Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favourite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. ओके, तो देखो इसकी आंट यहाँ पहले आ चुकी हैं, ठीक है, एंड वो यहाँ आने के बाद गायब हो गई थी। That's a bit unnerving. I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. ओके, तो ठीक है, अभी टाइम है उस रूम को खोलने का, एंड उस रूम को अगर खोलना है ना तो मुझे एक सेकंड, ये लास्ट है। ओके, मैंने खोल दिया। ये आसान था, ये ज़्यादा कोई मुश्किल टास्क नहीं था। एक सेकंड, यहाँ सब कुछ बिखरा हुआ क्यों है दोस्त? पहले मैं एक सेकंड, ये क्या है? ओके, ये शायद ओमिनस की आंट का ही लेटर है। A journal entry.
Signed by Noctua Gaunt. Ominous. The journal mentions many challenges ahead. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. भाई यहाँ सांप वाप आने वाला है क्या? अगर ऐसा होता है ना तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि एक बार हैरी पॉटर में आया था, क्या तो नाम था यार उसका, मुझे याद You नहीं। hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak past the tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. देखो दोस्त, ट्राई तो करना चाहिए। I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. It worked! Ominous, you possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. ओके हाँ, Between ये the तो two बात of है। us. Never mind. Revelio. चलो अच्छा है, ये भी सेबेस्टियन मेरे राज खोलते खोलते रह Like a गया। maze. Salazar Slytherin most likely खैर wanted एक this to सेकंड, be यहाँ difficult to solve. इसी तरह का मैकेनिज्म है। Incendio. ये मैकेनिज्म अभी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, एक सेकंड। And there's more than one gate ahead. Revelio. अभी तो एक्टिवेट नहीं है, मुझे एक बार एक्सप्लोर करना होगा ये जगह। बट हाँ, मैं इतना समझ गया हूँ कि हाँ कुछ तो पजल वाला सिस्टम है। एक सेकंड, इसके अंदर क्या है दोस्त? ओके ओके, एक सेकंड, एक और जर्नल एंट्री। एंड ये भी ओमिनस की आंट की है। अच्छा मैं समझ गया, देखो ये जितने भी गेट पे सिंबल है ना, मुझे वैसा ही सिंबल डालना पड़ेगा अगर मुझे अनलॉक करना है। तो वो जो तुम लोग साफ वाला This सीन journal देखा, entry, वहाँ पे भी दो it सिंबल है, mentions getting मुझे lost उसे and being गेट से मैच unwelcome. करना पड़ेगा एंड फिर गेट खुल जाएगा। Poor आसान है, Noctua. लेकिन उसके लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा सिंबल यूज़ होगा यार वहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं है कि कौन सा गेट। Confringo! ओके चलो ठीक है, इतना तो मैं समझ गया कि ये कैसे काम करता है। Lumos. फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ एंड मेरे ख्याल से मुझे ये गेट खोलना चाहिए। लेकिन एक सेकंड यार, इस पे एक बार मैं मुझे ये सिंबल देख लूँगा। Revelio. एक और बार Lumos. मैं देख लेता हूँ। ओके वो गेट छोड़ो, पहले मैं ये गेट खोलता हूँ। ऊपर है एक सूर्य शायद, ओके ऊपर सन है, नीचे इन्फिनिटी का साइन है, मतलब स्नेक अपने टेल को खा रहा है, यानी इन्फिनिटी वाला सीन। ओके तो मुझे एक सन चाहिए ऊपर, एक सेकंड भाई। ओके और नीचे मुझे इन्फिनिटी का साइन चाहिए। सही भाई, जैसे कि मैंने सोचा था कि ऐसे ही ये मैकेनिज्म खुलेगा एंड इजी था ये। Matching the symbols did लेकिन हाँ open मैं तुम्हें it. बता दूं, अगर तुमने ये Lumos. जल्दी About to कंप्लीट do नहीं that किया ना, myself. मतलब एक टाइम में, But you got to it first. फिर तो भाई ये सांप तुम पे अटैक कर देगा। खैर ज़्यादा हेल्थ नहीं जाएगा, हल्का फुल्का जाएगा, लेकिन फिर भी। ओके एक और यहाँ जर्नल एंट्री है, पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ। Ominous, your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite person in the world. Confringo! देखो यहाँ भी Revelio. है, यहाँ भी मैं कर सकता हूँ अनलॉक, लेकिन उसके लिए पहले मुझे गेट देखना पड़ेगा, ये गेट पे क्या सिंबल है, फिर मुझे यहाँ आना पड़ेगा एंड फिर मैं अनलॉक कर सकता हूँ। एक सेकेंड रुको। ओके ये गेट तो टूटा हुआ है, इस गेट की बात कर रहा था मैं। लेकिन एक सेकेंड इस गेट का मैकेनिज्म वहाँ नहीं है। मैं देख लेता हूँ वहाँ पे डाल के। ये थोड़ा सा भाई स्क्रैच है, लेकिन नीचे एक Z वाला सिंबल है, Z नहीं C का सिंबल है। ओके ठीक है, मैं समझ गया क्या डालना है मुझे बस वो है वैसा दिखे मैं, एंड मेरे ख्याल से यही है उसका लॉक। ओके चलो ट्राई करता हूँ। Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. ओके मैंने That ये sounded गेट भी खोल promising. दिया। अब कौन सा गेट बाकी है भाई? वो Another dial solved. रुको एक सेकंड, Impressive. Nice work. इसके बाजू वाला मैंने गेट खोल दिया, ठीक है।
ये तो मैं खोल चुका हूँ। एक सेकंड, यहाँ पे एक और जनरल एंट्री है भाई। Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. मेरे ख्याल से अब और गेट्स नहीं है, जितना था मैंने खोल That's the दिया। part I'm wary of. नहीं नहीं नहीं, All I ये गेट heard है was ना, इसी के बारे में तो मैं बोल रहा था। ओके, Keep going. एक क्या बोलूँ मैं? ओके मैं समझ गया हूँ। नीचे वाला स्क्रैच है, लेकिन ठीक है। ऊपर मुझे एक क्या, ऊपर मुझे एक टेढ़ा एप्पल दिख रहा है, मतलब वैसा साइन, या तुम रैबिट भी कह सकते हो, रैबिट के कान जैसा। मैं समझ गया हूँ क्या सिंबल है। ओके, Another. ऊपर जाएगा Not the रैबिट। welcoming sort, किधर was गया he? भाई? ओके ये रहा। नीचे थोड़ा स्क्रैच था, लेकिन मेरे ख्याल से ये Excellent work. We're another step closer. ओके मेरे ख्याल से मैं अभी सारे गेट्स अनलॉक कर चुका हूँ, Lumos. जो कि अच्छी बात है। अभी मुझे जाना है उन लोगों के पास। कहाँ गए भाई वो दोनों? ओके एक सेकंड, यहाँ पे I spotted something ahead. Looks troubling. भाई ये कुछ gates. खतरनाक ही जगह लग रही है मुझे। I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. एंड नीचे तुम लोग देख सकते हो क्रूशियो लिखा भी है। एक सेकंड भाई, ये काफी खतरनाक था। ये जो आवाज आया ना चिल्लाने का, ओके ठीक है मैं समझ गया। देखो अगर इस गेट को खोलना है ना, तो फिर तुम्हें ये कर्स करना पड़ेगा यहाँ पे, यूज क्रूशियो, फिर ही कुछ हो सकता है। एंड ये तुम्हें यूज करना है दूसरे पे, मतलब यहाँ दो लोग होने चाहिए, एंड एक कास्ट करेगा दूसरे के ऊपर, तब ये And गेट खुलेगा। Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous. I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. ओके हाँ यार, अगर मैंने It's ये going to be सॉल्व नहीं किया ना, तो difficult. फिर गेट लॉक हो चुका है, फिर हम तीनों भी यही फंस के रह जाएंगे। You said you know what to do. Tortured faces on the door and Crucio is etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? You know him better than I do. Very well. Wish me luck. Wish we had some liquid luck. Ominous, I know this is the last thing you want to do. Yes, it is. I thought you knew me better. But this is different. Whoever you cast it upon would have agreed to it first. It wouldn't be an innocent victim. We have to open the door. The spell won't work unless you mean it. That's true of all unforgivables. If it must be done, then one of you must cast it. ओके ठीक है, तो ये तो नहीं मानेगा, हम दोनों को ही कास्ट करना होगा। What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. देखो यार, ठीक तो यही रहेगा ना कि ये मुझे सिखा दे और मैं इसके ऊपर कास्ट कर दूं, क्योंकि अगर ये कास्ट कर सकता है तो आई थिंक कि ये झेल भी पाएगा इस कर्स I को। want to learn the curse, and I think it's best if I cast it on you. Very well, if that's what you want. अगर टाइम है भी Perform क्रूशियो the सीखने spell, का। raise your wand, point it at me, and firmly declare Crucio. Hold on as long as you can. भाई मैं सीख तो गया, लेकिन ये बहुत डरावना लग रहा है। ये तैयार तो है ना सेबेस्टियन? आई होप Ready? ये झेल ले इसे। I'm ready.
ओके भाई, ये से एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है इसके ऊपर कोई पहले भी कास्ट कर चुका है ये क्रूशियो। Are you all right? Revelio. Hey. I would have done anything. यहाँ कोई आर्टिफैक्ट मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग आ तो गए एंड मेरे ख्याल से ये जो ढूंढ रहा है सेबेस्टियन उसे वो चीज़ मिल जाए दोस्त, क्योंकि बहुत मेहनत की अभी हम लोग ने यहाँ पे। मेरे ख्याल से यही वो चीज़ है, Salazar Slytherin's scriptorium. ये आर्टिफैक्ट। I can't believe we're here. नहीं खैर मैं ओके दे सकता। Sebastian, चलो सही। ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? चलो एक बात तो अच्छी है यार कि हम लोग जो ढूंढने आए थे वो मिल चुका है एंड मैं अभी से देता हूँ, उसके बाद ये मिशन कंप्लीट। What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. और देखो मैं इससे एग्री भी हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पे जो स्पेल बुक मिली है उससे ये वो कर सीख सकता है जिससे एना को ठीक किया जा सके। I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Revelio. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. ओके तो यहाँ का मिशन कंप्लीट हो चुका है एंड मैंने अपनी एस्ट्रोनॉमी क्लास भी अटेंड कर लिया एंड इसे वो आर्टिफैक्ट भी मिल चुका है, यानी वो स्पेल बुक। ओके तो टाइम है अभी इस गेम प्ले को यहीं पे एंड करने का। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।